औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बच्चों, आज का टॉपिक जो हमारा है 11th क्लास के लिए है, 18 जून है आज 2021। तो टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या चीज़ होता है? ये रेजोनेंस एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो मालिक्यूल्स, कुछ मालिक्यूल्स है जिनका हम सिंगल लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फुलफ़िल कर लेते हैं उनकी स्ट्रक्चर को। तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए जब उनको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद देख लेते हैं कि उनकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल या बहुत सारी चीज़ें उनमें से जब हम स्टडी कर लेते हैं, तो सिंगल स्ट्रक्चर डज नॉट सेटिस्फाई दियर ऑल द प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं किसी चीज़ को, फिर ये आसान हो जाता है हमारे लिए समझना। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि ओजोन मालिक्यूल, जब आप देख लेंगे ओजोन मालिक्यूल इज ए बेंट मालिक्यूल, इट इज़ फॉर्मलाइज O3। ज़रा आप यहाँ देख लीजिएगा, दिस इज ओजोन मालिक्यूल। यहाँ सो दिस इज द लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मालिक्यूल। यहाँ आप देख लीजिएगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, 2 4 और 2 हुए 6, और ये बॉन्ड के 2 हुए 8। इसके हैं ये 2 बॉन्ड के 2 इस बॉन्ड के 2 हुए 4, इस बॉन्ड के 2 हुए 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इसी तरह इसके 8 हैं, 2 और 2 4, और ये बॉन्ड के 2 और ये बॉन्ड के 2 हुए 8। यानी हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम ये ड्रा कर लेते हैं, तो फिर जब ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि देयर आर नॉट 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, तो यहाँ हम स्ट्रक्चर जो हमने लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो हमने लिखा था कि देयर इज ए सिंगल बॉन्ड ऑन वन साइड एंड डबल बॉन्ड ऑन अनदर साइड। एंड सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होता है, सिंगल ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ, दैट इज 148 पिकोमीटर। और डबल बॉन्ड चूँकि कम होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है डबल बॉन्ड्स में ये ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, ज़्यादा ओवरलैप है इसमें, एक्शल ओवरलैप भी है, साइडवेज ओवरलैप भी है, डबल बॉन्ड है ये, तो ज़्यादा ये ऑक्सीजन आपस में नज़दीक आ जाएंगे। सो इट इज़ बॉन्ड लेंथ इज़ 121 पिकोमीटर। यहाँ तो मैंने ये बनाया है। तो जाहिर सी बात है, जब एक तरफ मॉलिक्यूल लंबा हो जाएगा दूसरी तरफ, सो इट शुड बी अनसिमेट्रिकल। तो मगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड द बॉन्ड लेंथ इज नाइदर सिंगल बॉन्ड लेंथ नॉर इट इज डबल बॉन्ड लेंथ। However, the bond length between the 2 oxygen atoms, whether it is between these 2 oxygen or these 2 oxygen, it is of same. Neither it is in accordance with the, neither its value matches with the single bond length nor it matches with the double bond length. So another concept came into existence, that is called the resonance. Resonance explains us that the molecules in which there are more than one canonical structures, there are more than one Lewis electron dot structures possible, then the actual structure is the intermediate between the two. Although there is not physical existence of these two molecules, neither there is a percentage that 50% of percentage 50% molecule is in this structure and 50% in this. They have no physical existence. However, experimentally we observe that neither there is a single bond nor double bond length, so the bond length is somewhat in between, that is 128 perhaps on this 128 per picometers, neither in agreement with the single bond nor in agreement with the double bond, so it is in between. So this is the actual structure of this ozone. That means this double bond character, it is not confined to this oxygen or to this oxygen. If we draw 2 canonical structures, these 2 structures in which we write a double-headed arrow in between these 2, these are called canonical structures. So double bond can be here in between these 2, or it can be here. So there it is it can be in intermediate. Neither there is double bond in here is double bond character, nor here is double bond character. The double bond character is in between. So the bond length is in between. It is not double bond. Double bond की bond length जो है, that is 121 picometer. It is 128 picometer. So this structure which is resolves in between these 2 structures is called canonical structure. This is called resonance structure. So these are called canonical structures.
So there is some intermediate structure of the molecule that is called resonance structure, and with the help of resonance it gets stabilized, it gets further stabilized, this molecule. So this energy is called resonance energy. सेम इज द केस ऑफ बेंजीन. जैसे आप बेंजीन आप जानते हो, आपने पढ़ा है कि बेंजीन में these there are alternate single and double bonds. So there are two possible structures when we replace these the single and double bonds at different carbon atoms. But the actual structure is the resonance structure, that these double bonds they are found in the whole ring, not confined to some carbon atoms. So there is another example of carbonate ion. This is CO3 2 minus molecule. ये देख लीजिए CO3 2 minus CO3 तीन है और 2 minus these 2 minus. But here we have inserted double bond here. Here we are inserting a here double bond, here double bond. But the actual structure is the intermediate of these two. This double bond is not confined here, or it is not confined here or here, but it revolves around through the whole molecule. So these are the canonical structures of this carbonate ion, and the resonance structure is the sum of all these structures. And it has been found experimentally that there is all the bond lengths are equal or of equal nature. So so far as these structures are concerned, either it should be here and this bond length should be less, and these two should be more, or here it should be less and here it should be more. But the actual experimental observation show us that all the bond lengths are of same length. So that is called, so this molecule has been stabilized by a phenomenon called resonance stabilization. So this is resonance. So same is the case in case of organic molecules. There are so many organic molecules, just like benzene. Benzene आपने देखा होगा C6 C6 H6 ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर दो हम ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. तो ये ऑल्टरनेट ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये शिफ्ट हो सकते हैं. यहाँ था, अब इसको यहाँ लगा लीजिए, फिर ऑल्टरनेट लगाओ. दे हैव चेंज्ड देयर पोजीशंस. सो the single bond and double bond is not confined at at these positions. Here we will say that there is single bond and there is double bond, there is single double bond, but it resonates, it shifts. So we write this structure like this. So it is not confined at one place. So it is the whole property of all the carbon atoms. So this is called resonance stabilization. तो यहाँ तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बेंजीन C6 H6. तो these are called canonical structures, and this whole phenomenon is called resonance, and this is called resonance stabilization. And there is a resonance energy by which they get by this energy they get stabilized. शायद इतना ही.